Bismillahirrahmanirrahim. Our new topic is contract of sale of goods. This is altogether a different topic than we were discussing in our last classes, but it does relate to the law of contract that we were studying in our very first lectures. So let's start with its history and then a few definitions before we move on to its details. So Sale of Goods Act came into force on 1st July 1930. So the laws that we are going to talk about, they are there since 1930. Even after the partition, the same laws were continued with small amendments according to Pakistani scenario. Now, the very important thing that we need to remember here is that it is applicable on movable goods. This law, the contract of sale of goods, all the things that we are going to we'll be talking about in this lecture, they are applicable on movable goods. So before we move on to our other details, we need to understand what are movable goods and what are immovable goods. So the easiest way to understand is that movable goods are those goods which when moved do not lose their value significantly, which means that these are those things which can be moved from one place to the other place, and when they are moved from one place to the other place, they have the same value. But immovable goods or immovable property, to be exact, is something which if you try and move will lose its value. It may have some value left, but it is going to lose its value significantly. Now, for example, consider a ball pen. So if you move a pen from one place to the other place, it is still going to write and it will have the same value. But at the same time, consider moving a property like a house, a constructed house, a concrete house. Can we move it? No, we cannot move it. Yes, we can move it, obviously. If we destroy it and take its remains and move it somewhere else, that is possible. But it is not going to have the same value. So, let's talk about movable goods a little bit more in detail. For example, we have cell phones. We keep on moving them from one place to the other place. They have the same value. For example, we have bag of sugar. We have bag of wheat. We move it from one place to the other place. They have the same value. Clothes, for example, are movable and they have the same value. Now, on the other hand, again, land. For example, if you have a plot or if you have a land somewhere, you cannot actually move it. So movable properties and immovable properties. So because our contract of sale of goods is only applicable to movable goods, so we'll be talking more about movable goods. Now there are some confusions, so we would like to give the examples of those things which you may think that they are not movable, but they are movable. For example, crops. Crops are movable, although they are attached to the earth, but the crops can be moved. For example, fruit is also attached to the earth when it is growing on trees, but you can easily move it from one place to the other place and it will have the same value. Now, water, for example, water can move from one place to the other place and it will have the same value.
The same way, natural gas, the electricity, all these things are considered as movable goods because you can easily move them from one place to the other place and they do not lose their value. Immovable goods, the good examples are a constructed house and you can say a plot or a piece of land or something. So the law or the today's topic is only applicable to movable goods. The second thing that we need to understand is the possession and the ownership, because we'll be hearing these words in our definition and other details. So possession and ownership, we have already talked about it, but simply ownership is malkiyat, कि किस कौन बंदा उसका मालिक है, but possession is कि किसके कब्जे में वो चीज है. For example, if you consider the contract of tenancy, किराएदारी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो किराएदार है, जो टेनेंट है, उस मकान में रह रहा होता है, सो पोजेशन उसके पास होती है, बट वो ओनर नहीं होता. ओनर डिफरेंट बंदा होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप. नाउ मूवेबल गुड्स में भी ये चीजें इस तरह हो सकती हैं कि यू मे हैव अ पोजेशन ऑफ समथिंग that you possess it, but you might not be the owner of that thing. For example, if you borrow a pen from your friend is the real owner of that pen, but now it is in your possession. It is not in your ownership, it is in your possession. So when we go to a retail store, again suppose we are going to buy a pen, that pen is in the possession and the ownership of that retail store person. Once you buy it, if you are carrying that pen with you, then you have the ownership as well as the possession. So there is a difference between possession and ownership. We need to be very clear before we move on to the details of the contract of sale of goods. Now, how do we define it? It is a contract. It is a contract. It is not an agreement, and you already know what is the difference between a contract and an agreement. So, it is a contract where the ownership of movable goods is transferred from the seller to the buyer for some price. Now, there are many things that we need to look into. For example, first of all, it is a contract. It has the legal standing. Second, where the ownership is transferred. Ownership is being transferred of what? Movable goods. Movable goods that we just talked about. And then there is a seller, then there is a buyer, and then there is a price. So many things to be careful while studying the definition, that first of all it is a contract, then ownership is being transferred, then what kind of ownership is being transferred? Ownership of movable goods. Who is transferring it? The seller is transferring it to the buyer and for some price. Now, there is one more thing that we need to note here is this thing, agree or transfer. Now, there are two things that we usually use, sale or an agreement to sell contract. Sale is when you immediately transferred the ownership. आप एक रिटेल स्टोर पे गए हैं, आपने उससे कुछ चीजें खरीदी, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको चीजें दी, आप घर आ गए, सेल इज डन. बट अग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? जब आप किसी फ्यूचर टाइम में ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए अग्री कर जाते हो.
हो सकता है प्राइस भी और ओनरशिप दोनों ही फ्यूचर टाइम पे आपने अग्री करना हो. वो कुछ चीजों में हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीमेंट टू सेल बन रहे होते हैं. Sale, again, a simple example is go to a retail store, buy things, give them money, get those things, come back, that is a sale. Agreement to sell, कई दफा आप आज एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हो कि इतनी चीजें डिलीवर करेंगे एक महीने बाद और इतने पैसे एक महीने बाद या जब भी आप दूसरे की ट्रांजैक्शन करोगे उसकी. So it can be a sale or an agreement to sell. Both are possible in contract of sale of goods. Because कई दफा आपके पास immediately available नहीं होती वो चीजें. Those goods are not available at the time of the contract. So आप agreement कर लेते हो कि फ्यूचर में आपको बेची जाएंगी वो चीजें. So both are possible. Then, as we've been studying essentials of different things, there are essentials of sale of goods of contract. First of all, this is the first essential, that it is a contract. It should be a contract. क्या मतलब है उसका? That all essential of a contract must be fulfilled. You've already read these essentials of a contract, जिसमें आपको पता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी, लॉफुल कंसिडरेशन थी, अदर फॉर्मेलिटीज थी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड अ फ्यू मोर थिंग्स. वो जो आपके पास पूरी लिस्ट है, दैट should be fulfilled. So all the essentials of a contract must be fulfilled when we are talking about sale of goods contract. So this is the first essential कि ये पूरा होना चाहिए, contract की सारी formalities पूरी होनी चाहिए. Then there must be a seller and a buyer. Seller and buyer का होना लाजमी है. You cannot sell things to yourself. Nobody can do it. If that is the case, or which is obviously cannot be the case. So contract of sale of goods में आपके पास there has to be one seller and another buyer. That means two parties should be there, and one party must be buyer and the other party must be the seller, and these two parties are actually forming the contract of sale of goods. The third essential is the transfer of property. That property must be transferred, or you make an agreement to transfer the property. Now this agreement does not mean that it is not a contract. It means that there is a legal liability. You're just agreeing to a certain date in future that आप future में जाके वो transfer कर दोगे ownership. But both have the equal footing. Then there has to be some subject matter, things for which the contract is being made. तो सब्जेक्ट मैटर का होना भी लाजमी है कि किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, किस चीज को बेचने के बारे में बात कर रहे हो, किस चीज की सेल हो रही है. If there is a seller, what is that seller selling? If there is a buyer, what that buyer is actually buying. किस चीज की प्राइस पे कर रहा है. So then another essential is that there has to be a price. जैसे आपने पढ़ा हुआ, आपको पता है कि कंसिडरेशन मस्ट है, लेकिन हमने साथ ये भी पढ़ा था कि लव एंड अफेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, द अदर डिटेल्स. बट देयर हैज टू बी अ प्राइस ऑफ द सेल दैट यू आर ट्राइंग टू मेक. If goods are being exchanged only, it is a barter and not a contract of sale of goods. For example, अगर आप किसी को कुछ चीजें दे रहे हैं और उसके बदले में सिर्फ चीजें ले रहे हैं, करेंसी या प्राइस या वो चीजें नहीं ले रहे, so that is a barter system and it doesn't fall in this law, in this sale of goods contract. But कई दफा ये होता है कि if there is a partial exchange, then it is a sale of goods contract. Partial sale का मतलब है कि हो सकता है आपने
फॉर एग्जाम्पल आप पेन्स ही वो कर रहे हो, बेच रहे हो, एक बंदा पेन बेच रहा है, दूसरा बंदा कॉपी बेच रहा है. सो एक बंदा उसको सर्टन पेन, फॉर एग्जाम्पल 100 पेन्स दे देता है और वो उसको 20 कॉपीज दे देता है. बट डिसाइड ये होता है कि कोई एक बंदा उनमें से कुछ प्राइस भी पे कर रहा होगा, कुछ एक्सचेंज हो जाएगा गुड्स का गुड्स के साथ और कुछ आप पैसे दे दोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 पेन्स जो थे वो 1 रुपी पर पेन था तो 100 रुपीज बनते हैं, और कॉपी जो है वो 20 रुपीज की एक है, तो दो आप कॉपीज दे रहे हो उसको और 60 रुपीज शायद साथ दे रहे हो और उससे 100 पेन ले रहे हो. सो दिस इज अ पार्शियल एक्सचेंज. सिंपल है, बट स्टिल इफ यू डोंट गेट इट यू कैन ऑलवेज आस्क मी अ क्वेश्चन. बट इफ देयर इज अ पार्शियल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स एंड पार्शियली आप प्राइस पे कर रहे हो, तो फिर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ही फॉल करते हो. देन another essential is that it must be a sale or agreement to sell, which means that ownership should be transferred at the time of the contract or at some future time. Both are fine, but there has to be the ownership transfer. One person is transferring the ownership of those goods to the other person. That is also the essential. Then other formalities. Other formalities should be fulfilled. For example, if somebody wants it to be a contract which should be written on a stamp paper, then it should be on a stamp paper. If it is a verbal contract, if the other person wants it to be in writing, we need to do it in writing. If a company has a policy that before making a sale, this is what is required, then all those things should be fulfilled. So other formalities of a contract should also be fulfilled. So these are the essentials of the sale of goods contract. उसको सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेलर एंड बायर होना चाहिए, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, प्राइस पार्शियल और फुल प्राइस होनी चाहिए, सेल और अग्रीमेंट टू सेल में से दोनों में से कुछ हो सकते हैं, एंड देन अदर फॉर्मेलिटीज शुड आल्सो बी मेट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गुड्स, what are the different types of goods that we are talking about? So mainly, broadly, there are three types of goods. One, existing goods. Two, future goods. And three, the contingent goods. Existing goods, future goods, and contingent goods. These are the three types. These are the three main types. But the existing goods are further divided into three subtypes: the specific goods, ascertained goods, unascertained goods. So these are the subtypes of existing goods. So let's talk about each of them in detail. Starting from the existing goods. Now, existing goods are those goods which are owned and possessed by the seller at the time of the sale. जो उस टाइम पे, सेल के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अवेलेबल हों और पोजेशन में हों और ओनरशिप में भी हों सेलर की, उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिटेल स्टोर पे जाते हो तो वहां शेल्फिंग में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जो आप शॉपिंग करते हो, तो उस टाइम वो सारी चीजें जो हैं वो प्रोबेबली उसकी पोजेशन में तो हैं ही, लेकिन उसकी रिटेल स्टोर की ओनरशिप में भी होती हैं. यू जस्ट पिक दोज थिंग्स एंड आप उसके पास, रिटेलर के पास रह जाते हो, यू मेक अ ट्रांजैक्शन एंड आप बाय कर लेते हो. सो एग्जिस्टिंग गुड्स जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रही हो. ये मजीद क्लियर होगा जब हम फ्यूचर गुड्स पढ़ेंगे या कॉन्टिजेंट गुड्स पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये है कि दे आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल.
Now it has three types. पहली बात क्या है? पहली type is the specific goods. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. Specific goods that are identified and agreed upon at the time of the contract are known as specific goods. जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है एंड उन पे एग्री कर लिया है कि दिस इज व्हाट somebody is selling and this is what you are buying, वो आपकी स्पेसिफिक गुड्स हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल cows. If you go to buy a cow or any other animal, आप क्या करते हैं? आप ये तो नहीं कहते कि if there are 50 cows, आप कहते हैं कोई एक मुझे इसमें से दे दो. या कोई जानवर है जिस तरह आप यूजुअली ईद पे और उस पे कुर्बानी के लिए खरीदने जाते हैं, तो आप ये तो नहीं कहते कोई एक मुझे पीस इसमें से चाहिए. यू एक्चुअली आइडेंटिफाई and then you agree upon buying that thing, buying that animal. इसी तरह अगर आप कोई और चीज भी लेने जा रहे हैं, you identify it and then if you want to buy it, that is a specific good. Now on the other hand, ascertained goods. This is the second type of existing goods. Goods that are identified after the formation of the contract are ascertained goods. These goods are usually in bulk, like bags of sugar or rice. For example, again आप एक retail store पे गए हैं, वहां को 20 bags of sugar पड़े हुए हैं. Not all of them are exactly the same. All of them may have 1 kg of sugar, but you cannot say that number of grains. So they are different. They're almost the same, but they are different. But you don't say that I want the third bag. If you say it, that is a specific good. But if you just you're making an offer that I want to buy 1 bag of sugar or rice, and you make a contract, actually you've said it and the other person has agreed to it, and then after that the retailer is going to pick 1 bag from there, most probably the most upper one or the easiest one, or the one which is in his or her access, तो आपको उठा के दे देगा and you don't say anything. तो ये असर्टेन गुड्स हैं जो कि उस टाइम बल्क में तो डिसाइड हो जाती हैं, बट स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं होती कि कौन सा बैग चाहिए. एंड इफ यू से कि आपको वही वाला बैग चाहिए जो आपने डिसाइड किया है, तो देन इट्स अ स्पेसिफिक गुड. इसी तरह अगर आपको, जब हम फॉर एग्जांपल इफ यू बाइंग अ शर्ट और अ सूट, तो आप जो पसंद करते हो सूट, वो तो आप करते हो किसी मैनिकन से या किसी डिजाइन से या कुछ उससे, बट द वन दे आर गिविंग यू इज नॉट देयर एट दैट टाइम. तो वो क्या करते हैं, वो कहीं से और से पैक्ड पीस आपके लिए ले आते हैं और वो कहते हैं ये ले लें. सो सर्टेन गुड्स. द थर्ड टाइप इज द अनसर्टेन गुड्स. अनसर्टेन गुड्स ये थोड़ा सा उससे भी ज्यादा आपकी डिसीजन पे स्पेसिफिक नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स or goods not identified or agreed upon at the time of the contract, but they are explained through a sample. For example, if you go to a grain market, वहां ऐसे तो नहीं हो सकता कि उन्होंने बल्क के बल्क ही रखे हों, and if you are going to buy a lot of grains, तो वो क्या करते हैं, for example, let's talk about rice. Basmati, kernel, Sela, different types of rice are there. So if you want to buy a lot of rice, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपको सारे के सारे बैग्स दिखाएंगे. Maybe the shop is very small and people are just sitting there with 1 kg of each type of rice. वो क्या कहेंगे, आपको सैंपल दे देंगे.
ये राइस हमारे पास पड़े, ये उसका सैंपल है. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द सैंपल आप वो चीजों को डिसाइड कर लेते हो कि इतने आपको चावल जो है वो खरीदने हैं, एंड आप उस सैंपल की बेस पे उस गुड को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो उस गुड को खरीदने का. So those things which are described or explained by a sample are known as unascertained goods. So these are the three different types of specific goods. Sorry, existing goods. The first one is the specific goods, certain goods, unascertained goods. Specific goods जो उस टाइम पे आप आइडेंटिफाई करते हो बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सर्टेन गुड्स जो आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं करते, बट बल्क में चीजें पड़ी हुई देख के डिसाइड कर लेते हो. एंड थर्ड इज विच आर एक्सप्लेन्ड बाय द सैंपल. नाउ द फ्यूचर गुड्स. हमें पता है बिजनेसेस में बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो अवेलेबल ही नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ऑल दोज थिंग्स विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ऑर्डर. ऐसी चीजें जब आप ऑर्डर करेंगे तो तब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन उसके लिए होता क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर लेते हो. एंड दोज थिंग्स आर नोन एज फ्यूचर गुड्स. उस टाइम पे ना उनका एग्जैक्ट सैंपल होता है, ना उस टाइम वो चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सो वो मैन्युफैक्चर होनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है. फ्यूचर गुड्स में सेल नहीं होती बिकॉज ये सारी फ्यूचर गुड्स हैं और आपको फ्यूचर में ही डिसाइड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आप मग्स बनवाते हो कंटेनिंग स्पेसिफिक नेम्स और लोगोज, और आप किसी को ऑर्डर देते हो कि इस लोगो का या इस नाम का मुझे इतने मग्स बना दें या टी शर्ट्स बना दें. वो क्या है? फ्यूचर गुड्स हैं. People are going to specially make those goods for you. They are not available for general sale, and everybody is going to give a different order at different times. Then in businesses ये भी बहुत ज्यादा होता है. We might not be aware of it that fruits जो हैं and crops जो हैं वो अभी they are not fully grown, लेकिन उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से ही हो जाता है कि फ्यूचर फ्रूट्स जो होंगे उसका इतना कॉन्ट्रैक्ट है और इतना उसका ठेका वगैरह है, तो पहले से आप पैसे ले लेते हो और फिर वो जो भी बाग होता है या जो भी ट्रीज होते हैं वो बायर के होते हैं. बायर का वो जो फ्रूट में से जो भी फायदा नुकसान हो वो सारा बायर का होता है, बट वो भी उस टाइम पे फ्यूचर गुड होती है, स्पेसिफिक या एग्जिस्टिंग गुड वगैरह नहीं होती. The third main type is known as the contingent goods. Contingency आपने बहुत दफा चीजें सुनी हुई है. Contingency का मतलब होता है सिचुएशन. So the availability of these goods is dependent on an uncertain event or a situation which may or may not happen. So ये ऐसी goods हैं जो मे बी किसी को मिल सके, मे बी किसी को ना मिल सके. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन अग्रीज टू सेल अ पेंटिंग इफ ही और शी गेट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर और इन द ऑक्शन. अब क्या है, एक बंदा ऑक्शन पे जा रहा है, पेंटिंग खरीदने जा रहा है. आप उससे पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि इफ you get this thing from the real owner or in the auction तो आप मुझे ही सेल करोगे और इतने प्रॉफिट पे सेल करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्शन में मैं जाता हूं, मुझे 200 रुपीज की पेंटिंग मिलती है, तो मैं पहले से जाके उस अपने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता हूं कि अगर मुझे 200 की या जितने की भी मुझे पेंटिंग मिली, मैं उस पर 500 रुपीज एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करके आपको ही बेचूंगा. सो दीज आर द थिंग्स विच आर नोन एज contingent goods. They are dependent on some situation. अब हो सकता है सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि उसको ऑक्शन में किसी और को मिल जाए पेंटिंग और आपको ना मिले. So those are the things which are known as contingent goods.
तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स हैं. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स जो है उसमें हमने इतना ही इसको कवर करना है. सो लेट्स जस्ट रिपीट व्हाट वी डिड. We started with the history of this contract, and we said that it came into force on 1st July 1930, and before partition जो भी laws use हो रहे थे उसी को हमने continue कर दिया. This is only applicable to movable goods. Movable goods का क्या मतलब है? ऐसी goods, ऐसी property which if you move from one place to the other place does not lose its value significantly. जिसमें हमने कहा कि if you are moving a marker or a pen from one place to the other place, it will have the same value. But if you're moving a property like a house or a land, first of all, you cannot move it. But even if you try and move it, it will not have the same value. So movable property and immovable property, we talked about its differences. Then we talked about the possession and ownership differences. Possession, that you possess that thing. Ownership, that you're also the owner of that thing. You might be having a possession and the ownership at the same time. You might be having a possession of something and not having the ownership, and you might have the ownership but not the possession. So ये सारी चीजें possible हैं. Then we talked about his definition कि ये ऐसा contract है जिसमें ownership of movable goods is transferred or agreed to be transferred from the seller to the buyer for some price. And इसमें हमने कहा सेल भी हो सकती है and agreement to sell भी contract में हो सकता है. Then we talked about its essentials. हमने कहा contract होना चाहिए, सारे essential contract के इसमें fulfill होने चाहिए. There has to be a seller, there has to be a buyer. Then we talked about that there must be a transfer of property, which is at the time of the contract, or you may have an agreement to sell कि आप किसी future date पे transfer कर रहे हो. Then there has to be a subject matter. किस चीज की selling and buying हो रही है? That thing has to be there. Then a price should be there. और इसमें हमने कहा कि अगर आप complete barter कर रहे हैं कि things in exchange of things, तो वो इस law में नहीं आता. But अगर partial और fully price पे हो रही है तो then it falls in this category. देन हमने कहा कि सेल भी हो सकती है, अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, फ्यूचर डेट में भी हो सकता है और प्रेजेंट डेट में भी हो सकता है. अदर फॉर्मेलिटीज इसमें सारी पूरी होनी चाहिए इफ दे आर रिक्वायर्ड. वी टॉक्ड अबाउट द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द गुड्स: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स and contingent goods. These are the three main types, and then existing goods are further subdivided into three more categories: specific goods, ascertained goods, and unascertained goods. So when we talk about existing goods, they are the goods which are owned and possessed by the seller at the time of the contract. Now इसमें तीन टाइप्स क्या हैं? स्पेसिफिक गुड्स, जो पहले से आइडेंटिफाई की जाई हो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, which means कि आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है गुड्स, देन यू आर गोइंग टू अग्री एंड देन यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. तो काउस की हमने एग्जांपल की कि आउट ऑफ नंबर ऑफ काउस you don't just say that I want to buy or I want to sell one cow out of these 50 or 30 or 80 cows. You identify a cow first and then you say that I want to buy this cow. And then we talked about a certain goods कि ये बल्क में होती हैं. बल्क में आप इसको चूज तो कर लेते हो, बट यू डोंट स्पेसिफाई कि बल्क में से कौन सी, फॉर एग्जांपल बैग है या कौन सा ऐसी चीज है जो आपको चाहिए. सो the retailer or the other person, the seller, can just give you one out of those 50 or 30 or 40 things. Unascertained हमने कहा कि ऐसी हैं जो सैंपल से एक्सप्लेन की जाती हैं. They are not lying in the bulk as well उस टाइम पे. तो सैंपल से एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद आप उसको खरीद लेते हो. Then we talked about the future goods, ऐसी goods which will be manufactured in future. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें बिजनेस में होती हैं जो आपने स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर करवानी होती हैं. फॉर एग्जांपल मग्स कंटेनिंग स्पेसिफिक नेम्स, लोगोस, फ्रूट्स फॉर जो फ्यूचर में होने हो. इनफैक्ट फर्नीचर कई दफा आप बनवाने जाते हो तो वो भी फ्यूचर गुड ही होती है. कॉन्टिजेंट गुड्स
हमने कहा these are the goods which are dependent, that their availability is dependent on some uncertain event. Auction हो सकती है या present owner से buying हो सकती है. तो अगर ऐसी goods हों तो वो contingent goods होती हैं जो किसी event पे या किसी situation पे dependent हो कि उन available होंगी या नहीं होंगी. इन तीनों टाइप्स की मेजर टाइप्स की गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो लिसन टू इट केयरफुली एंड देन थोड़ा सा इसको नेट से बाकी चीजों की एग्जांपल देखें एंड देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.